Are we waiting for someone, Kazan? Kazan, we are not able to hear you now. Okay, so thank you very much to each one of you. You are up on the platform. It's very nice to have you all. Thank you very much for being so patient for this date. It was somewhat of a technical glitch. To all those people who are seeing us at 8:15 and are concerned कि हमने तो 8 बजे बोला था और हम सवा 8 बजे क्यों हैं. So just to let them know with all your presence together that we were all here at 8 only, just trying to figure out some technical glitches so that we could take them up. And then start off with the conversation so that none of them miss out on it. So thank you very much to each one of you for making it on this program, for making it to this conversation. It's really nice seeing all of you, and it's really amazing, you know, having such a conversation with such people. हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ पर जो आज का हमारा टॉपिक है वहाँ इस तरह की बात नहीं की जाती है या यूजुअली की जाती है. Lekin with this platform of O Learning Academy, where we bring in all the learning initiatives, where we bring in all the learning interventions, all the learning material, we also would want to bring in something that is directly connected to learning, that is directly connected to awareness, but is of a certain topic that is either considered to be taboo or has some sort of stigma attached. So that's how we come up to be together and be talking about this topic. आज का दिन हमारा बिल्कुल पहला दिन है हमारे ओला अवेयरनेस वीक का. So I would really want to take a minute and let all the viewers know that this is the very first intervention, very first gathering of this entire week of awareness that we are celebrating this time around. हमारे पास रोज कोई ना कोई गेस्ट मौजूद है, रोज एक्सपर्ट मौजूद हैं, रोज हमारे पास कंसल्टेंट्स मौजूद हैं. इस तरह के लोग हमारे पास मौजूद हैं जो आपके और हमारे साथ ये सारी कॉन्वर्सेशन करेंगे और कोई ना कोई एक ऐसा टॉपिक जो हमने उठाया हुआ है उस पे आपके साथ अवेयरनेस से रेलेवेंट क्वेश्चंस और कॉन्वर्सेशन करेंगे. They'll be there for your questions, they'll be answering each one of your queries. तो आपने जितने सवाल करने अगर आप हमारे साथ लाइव मौजूद हैं तो आप Am I audible to you? Yep. Perfect. So it's just that I'm so sorry I lost the connection in the middle of when I was talking about it. तो हम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं थोड़ा सा हम यही होता है हमारे जब हम अवेयरनेस की बात करने जाते हैं ना
तो दुनिया में हमें लोग रोकने आ जाते हैं, डिजिटली करने जाए तो हमें नेटवर्क रोकने बैठ जाता है। बट दैट्स हाउ इट इज। हम ना रुकने के इस मिशन पे उन लोगों के साथ मौजूद हैं जो हमारे साथ इसी ना रुकने के मिशन को ज्वाइन इन करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। ओवर दिस अवेयरनेस वीक हम बहुत सारे टॉपिक पे बात करने लगे। सो वी आर सपोज टू टॉक अबाउट जेंडर इक्वालिटी, वी आर सपोज टू टॉक अबाउट what is the topic for the day? That's breast cancer awareness. You're supposed to talk about mental health awareness. You're also supposed to talk about cyber security. And there's one more topic that I see to surprise to you. Apparently not a surprise anymore. आपने देख ही लिया होगा poster में. But this is how you're supposed to celebrate this entire awareness week. So आपके साथ गुजारिश है कि जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, आप हमारे साथ पूरे हफ्ते में मौजूद रहे। वी डोंट नीड आवर्स ऑफ योर्स, हमें आपके साथ दो तीन चार घंटे की चाहिए, जस्ट 60 minutes जिसमें we'll have experts coming in and talking about it. So without any more disturbance, I've been opening up this topic, so I would not want to delay this. हमारे साथ काफी देर से मौजूद होंगे। I would directly come on to the subject that we have for the day, that's breast cancer awareness. October is celebrated as Pinktober. कहा जाता है इस पूरे मंथ के अंदर ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड और रेलेवेंट अवेयरनेस कैंपेन्स चलती रहती हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट support coming in for this particular initiative too. इतना support इस चीज के ऊपर आना, उसके बाद भी एक certain level of stigma attached होना कि यार नहीं मुझे नहीं हो सकता, and ये होना कि यार शायद ये जो है इसका diagnosis या इसके सिम्टम्स जो है वो मैं उसी वक्त देखूंगा जब या देखूंगी जब मेरे पास लिस्ट में बाकी ऊपर की सारी चीजें क्लियर हो जाए। So my first hit in the head doesn't ever go towards it. My proactive approach in the head doesn't ever go up towards it. यार why not have a general checkup and see. हम नॉर्मली बुखार का तो देखते रहते हैं, तबीयत संभालते रहते हैं, कुछ नहीं तो पेनाडोल खाते रहते हैं, वी मूव अबाउट इट। हमारी तबीयत ज्यादा खराब होने लगे तो हम डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं और हमारे लिए यूजुअली बेसिक कुछ टेस्ट होते हैं जो हम पहले कराते हैं। लेकिन कुछ चीजों को जो हम अपनी बॉडी में देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उनके अंदर चेंजेस ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, हम कहते हैं नहीं मे बी दिस इज समथिंग, मे बी हार्मोनल, मे बी शायद बॉडी है थोड़ा ग्रो कर रही है, थक गया होगा तो यूं हो गया होगा तो वो हो गया होगा। But we don't seek expert advice. What is it all about? Why is it happening? What is wrong in this? What is right in this? Let's have some experts talk about it with just one very quick fact. कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इतना बढ़ गया है कि जहां पर हर 9 में से एक खातून इससे डायग्नोस होती है। यानी इमेजिन करें कि अगर आपकी फैमिली के अंदर 10 खवातीन मौजूद हैं तो उन 10 में से एक ना एक को चांस है कि वो इससे डायग्नोस होंगी। And this is something that is, if not very serious, then at least sensitive and crucial for yours and mine understanding. हमारे लिए इसकी समझ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। And that's why we have gathered here together. We have 3 amazing people. इनके बारे में मेरे पास लिस्ट है, मतलब मैं अगर आपको बताऊं तो पूरी लिस्ट चल रही है। If I start talking about them, even just sharing their profiles would mean that I take up the entire hour, but I won't do so. I'll just first and foremost introduce Dr. Zubaida Qazi, who is the CEO and founder of Pink Pakistan Trust. The second individual that we have with us is Dr. Yabinder Serish. He's a consultant general and breast surgeon. She's also an assistant professor of surgery, Liaquat College of Medicine and Dentistry and Darul Sehat Hospital. Then adding diversity to the panel, we have Dr. Tarek, who is a consultant breast and endocrine surgeon from Patel Hospital. Thank you very much to each one of you for taking out time. I know रात का time है, but आप doctors के लिए सुबह क्या शाम क्या रात क्या, you have been on duty 24/7. So first of all, thank you very much for being a part of this profession and being yourself, making yourself available for your services at any time. मुझे याद है हमारे फैमिली में डॉक्टर होता है तो रात को 2:30 बजे कॉल आती है और उठ के जाना पड़ता है। So being associated to such a profession is not easy. Lekin, of course, you are doing it. So hats off to you. Thank you very much. Let's start with a very basic question. And I would rather want to start with Ma'am Zubaida. So I would just like to, because you're working on a trust. So you've been working with a lot of youngsters. You'll be working with a lot of women across the nation. And you've been seeing how are we more so ignorant towards it. So what is it that you feel is required to be done and taken into consideration when we talk about breast cancer in Pakistan? Thank you so much for inviting on your platform and talking on this important and sensitive issue. Sensitive in a sense that you already mentioned that it's a taboo and stigma, people don't want to talk about it.
I worked in a public sector hospital, and there, while working in public sector hospital, I've seen every day in women imaging department, especially in where mostly people are coming for this breast imaging. So I found this issue that it has to be addressed initially with the awareness, because people are really ignorant about the early presentation of the disease. The key towards the breast cancer treatment is its early detection, its timely detection. So the incidence rate, yes, it's high. It's high in Western world as well, but the rate of the mortality, I think both the doctors should agree with me. The mortality is probably high in our setup, more in Pakistan especially. So what I feel is that how we can save our women out there. And then we started this organization which which I'm working for. The people gathered in. I want to make a platform for the people who are working in individual capacity, many doctors, many educationists, philanthropists. So they all are working with me right now for this breast cancer. We started off with the awareness last year, and I went and probably 100 of places in just October, because I don't know, somehow October is a month for breast cancer internationally, but the need of awareness is throughout the year. So that's what we are doing. But exclusively when I started off seeing people one on one going, and I found this this gap in our society, that people are really ignorant. मतलब कुछ चीजें ऐसी थी जो मुझे लगता था कि प्रॉब्ली कुछ क्लास हमारी ऐसी है जो एजुकेटेड वाली है, जो थोड़ी वेल अवेयर है, उनको पता होती होंगी, बट जब आप इंटरेक्ट करने निकलते हैं तो आपको पता होता है कि नहीं भी पता होती। दूसरी चीज ये है कि हमारे मेल को सेंसिटाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये कि पता होने के बाद भी मैनी पीपल डजंट वांट टू, अगर उनको पता है कि ब्रेस्ट कैंसर ये है, उसके सिम्टम्स ये हैं, उसके लिए क्या करना है, स्क्रीनिंग भी करानी है, सब करानी है, बट स्टिल women doesn't want to कि कहीं कुछ निकल ना आए, और कुछ निकल आएगा तो फिर जो है वो उसका ट्रीटमेंट इतना लंबा है, इलाज बड़ा मुश्किल है, ये सारी चीजें हमारे पास। मैं आपको ये बताऊं तारिक कि मुझे क्यों ज्यादा एहसास हुआ कि इस पे काम करने का, बिकॉज मेरे पास पेशेंट्स मैंने उन हालात में आते हुए देखे जहाँ पे वी कैन नॉट इमेजिन कि किसी कोई जिंदा इंसान जो है वो अपने जिस्म के किसी हिस्से में उसके कीड़े लगे हुए हों, और आप बर्दाश्त ना कर सकते हो, उसके साथ बैठ नहीं सकते हो, स्मेल आ रही हो, तो इंसान नहीं रहे हम समहाउ। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बीइंग अ डॉक्टर, जब हम ओथ लेते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। तो एक तो ये वाली बात थी। दूसरा ये कि लोगों को फैसिलिटीज की भी कुछ प्रॉब्लम है, कि हेल्थ की फैसिलिटीज का बहुत ज्यादा हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। ऑल्दो हर जगह गवर्नमेंट सेक्टर में भी, प्राइवेट में भी सारी स्कैनिंग अवेलेबल है, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ लोगों को अफोर्डेबिलिटी का इशू है, कुछ लोगों को एक्सेस का इशू है, कुछ लोगों को पता ही नहीं है। तो ये काम भी फिर मुझे लगा कि करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, कि उनको रेफरल दिया जाए कि कहाँ पे फ्री डायग्नोसिस है, कहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट है, कहाँ पर आप जाकर के सहूलत से इलाज करा सकते हैं, और अर्ली डिटेक्शन का बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा। तो जिसमें और हमारे पास जो कुछ ऐसे भी पेशेंट आते हैं जहाँ पर जो है हमें इजाजत नहीं है कि हम उन फीमेल्स से बात करें, सो रादर वी हैव टू टॉक टू देयर मेल्स कि उनको क्या इश्यूज हैं, क्या नहीं इश्यूज हैं। तो ये वाले लोग जो हैं, उन बेचारों के साथ क्या किया जाए। तो आपको वन ऑन वन जाके अग्रेसिवली अवेयरनेस देने की बहुत ज्यादा मुझे नीड महसूस हुई। तो आई एम अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे साथ हमारे यहाँ मेरे ख्याल से फिलंथ्रोपिस्ट की शायद हमारी कंट्री में कमी नहीं है। देयर मेनी पीपल हु वांट टू वर्क आउट देयर, सो देयर आर सो मेनी वॉलंटियर्स एसोसिएटेड विद मी राइट नाउ, जिनमें डॉक्टर्स स्पेशली बहुत सारे हैं। और हमने स्टूडेंट्स को, ज्यादातर यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को वॉलंटियर लिया है, उनके साथ एफिलिएशन रखी है, ताकि हम उनको ट्रेन करते हैं, और उनके थ्रू जो है वो अवेयरनेस कैंपेन करवा करके जितनी ज्यादा मास स्केल पे हो सके, क्योंकि हर जगह आपका खुद जाना इम्पोर्टेंट वो अवेल नहीं होता, मुमकिन नहीं होता। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ आपको मैं अपने, और ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि काम करी है विमेन हेल्थ के ऊपर, तो
ब्रेस्ट कैंसर पे एक्सक्लूसिवली ज़्यादा काम है और बाकी हेल्थ इश्यूज के ऊपर भी है। और हम अभी जो है अभी बेसिक हेल्थ केयर यूनिट्स हमने गवर्नमेंट से 4 लिए हैं, जिसको हम इंशाल्लाह स्क्रीनिंग सेंटर्स में डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके अंदर मेमोग्राफी और अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटीज अवेलेबल करें, स्पेशली फॉर द अर्ली स्क्रीनिंग ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। हमने एक मोबाइल ऐप बनाई है एक्सक्लूसिवली फॉर द ब्रेस्ट कैंसर विद द नेम ऑफ पिंक पाकिस्तान, जो मैं अपने इन दोनों डॉक्टर्स को भी बताना चाहूंगी कि दैट इज अवेलेबल फॉर एवरीवन फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसपे हमने क्योंकि कोविड के ज़माने में बनाई थी तो ऑनलाइन कंसल्टेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों को समझ आ रही थी बात की कैसे होती है, कैसे डील करना है। सो देयर मेनी डॉक्टर्स उसमें कंसल्टेशन के लिए हमारे साथ हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, तो वो अवेलेबल है लोगों के लिए। उसमें एग्जामिनेशन के का पूरा तरीका, सेल्फ एग्जामिनेशन का, और फिर डॉक्टर को कंसल्ट करने के लिए उनके तमाम उनका स्केड्यूल, एवरीथिंग इज अवेलेबल। So from their platform, I would like to know people about this mobile app as well, because it's for everyone. कोई उस पे खर्चा नहीं होना किसी का, just download it and उससे फायदा उठाएं। um, इसके अलावा जो है I would like to now take turn to someone else to talk about it, because I want to know कि बाकी लोगों को शायद बहुत सारी चीजें मुझे ना पता हो, जो मेरे ब्रेस्ट सर्जन ज्यादा जानते हैं, तो I want to take information from them as well so that I can improve myself. Perfect. Thank you very much, ma'am. My question is a little transition towards the two surgeons, because she comes in from a lot of the work of working with a lot of people across the nation through awareness campaigns and all. But you have a lot of on-ground experience, primarily with the patients in itself too. So my question to both of you first, Tariq Saab, aapse, then Yabinder, I would also like to hear from you. कि जब आप पेशेंट्स को डील करने लगते हैं तो उनकी तरफ से आपको किस तरह का रिस्पांस आता है? लाइक आर दे वेरी ओपन टुवर्ड्स इट, आर दे कैजुअल अबाउट इट, और आर दे वेरी सीक्रेटिव अबाउट इट कि लाइक किसी को पता ना चले मैं यहाँ आया हूँ या आई हूँ, बस ये है, ठीक है, ओके, हाई रेट, या आर दे क्वाइट ओपन अबाउट इट जिस तरह से हम अपनी बाकी बीमारियों के लिए? That's a good question. Actually, what happens, क्या होता है कि हम तक जब तक पेशेंट आ जाता है तो वो खुल चुका होता है, सो टू स्पीक, वो फिर बात कर लेते हैं, वो दिखा भी देते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, प्रॉब्लम इज बिफोर दैट, जो डॉक्टर जुबैदा ने भी जो बात की थी कि बिकॉज देयर इज व्हाट वी कंसीडर टू बी टैबू और स्टिग्मा, अनफॉर्चुनेटली, तो they don't come to us because they're afraid to go for whatever reason. और उस टैबू में एक जो मसला है, and again Dr. Zubaida touched on that, it is not the patient, sometimes it is the family, the relatives. I have a lot of patients who come to me, they come very late, and some of them say that they were hiding it, and others say that the family did not let them go on, and so that is a real problem. One of the difficulties that we have, again, I'm sure my colleagues will agree with me in this, is that we are asking about early detection, but once you have detected it, what do you do then? That's also become a bit of a problem, because there's so few places where people can go and get treated. Do you know how much it costs to get chemotherapy for breast cancer? Yeah, well, it can cost anywhere between 4 lakhs to 12 lakhs. That's just the chemotherapy. And you add the radiotherapy on top of that, and you add the surgery on top of that. And because there's one medication which is just so frightfully expensive, and in a certain category of patients that is needed, no matter what you do, and it is very expensive. So once you've detected it, what do you do thereon? It's a question I asked last year to a lot of people. I was new at the time, I was a bit naive. I didn't know about the situation on the ground in Pakistan. And I discovered that nobody really had an answer. There are a lot of good places that are doing a lot of good, and you can't ignore them, you can't belittle them. They really are doing a lot of good, but it is still nowhere near enough. So that's a real problem. It's not the question you're asking me, I know. So when patients come, I have a peculiar problem being a man.
I have particular difficulty seeing patients, but once they come to me, once we talk to them, they open up quite well. I mean, there's no problem with patients after that. Once they come to you, they talk to you. But getting to doctors is the problem. Whether male or female doctor, getting to the doctor is the biggest problem. And again, if you talk about just the rural areas, you will find that it's a real disaster there. Let me give you one small example. I had a woman come to me last week. We're running a free breast clinic at Patel this whole month, 4 days a week, about 5 hours a day. And we see a large number of patients there. We have a problem that once we see the patient, quite often we don't know what to do with them except guide them where to go. Anyway, so this woman comes along and she had surgery about a year and a half ago. And then her family refused to have her go for radiotherapy. And so now she's come to me with a very large wound on her chest wall here, which is a tumor that's come back and it's eroding into the chest wall. So where do you put this? If her husband had agreed to take her for treatment, she may not have had to go through this very painful and what will be a very, as Dr. Zubaida again mentioned earlier on, very infected, very smelly wound which will eventually bleed to death. So that's the sort of stuff that we're looking at in Pakistan, unfortunately. At one end, it's a very depressing picture. But what people need to understand, again, it's been talked about, is if we pick it up early and we get some treatment done early, you can stop this kind of thing from happening. That's what we need to get done. Yeah. Thank you very much, Tariq Saab. My question to Ma'am Yabinda is again the same. I want her views on this one. They've been talking a lot about the patients coming to the hospital to see the surgeon or to the doctor. I would really like to hear from you if you have any experiences with patient being there, not being very open about it and rather more secretive or still ignorant about it. I guess you're on mute because of which we cannot. Okay, yes. The thing is कि when we started initially, अगर मैं कहूँ even 5 years back, things were different. Right now, what I'm seeing is a mixture of patients. There are a few patients who are just too aggressive about this breast cancer, and even if they're having a little bit of symptom, they come to us and get their screening done. Right? They're getting their ultrasounds and mammograms done. There are very young patients who are scared. Those who have had a breast cancer and any of the family members, so they're getting screenings done. On the other hand, we are seeing patients who present to us at the late stage 4 disease already eroding, already spread to different organs. So there is a mixture of patients first of all, right? And then the second thing is that this taboo still remains. No matter how hard we are trying, no matter people are putting in a lot of effort, change has come. अगर मैं कहूँ पाकिस्तान में change नहीं आया तो this is wrong. There has been a lot of change in the past few years, especially अगर मैं कहूँ last 3 to 4 years में the approach has changed. People have started coming, people have started talking about it, and most importantly, because in most of the families, one member or the other has been affected. अगर हम पाकिस्तान के numbers देखें तो they are very alarming. There is 1 in 9 women is going to suffer from breast cancer, right? So this is a big number. Last year के stats जो हैं जो हमारे पाकिस्तान के हैं तो that is very scary. 36,000 cases of breast cancer were detected, and out of which 13,000 women died in Pakistan. So this is a big number, alarming number. People are becoming more and more aware. Last year की campaign बड़ा successfully run हुई थी overall TV पर भी, and this year too you can see कि telephonic जो उन्होंने recordings भेजी हैं, many patients, मतलब I must say I'm not going to say a lot, but yes, if I say कि मेरी OPD जब run हो रही होती है तो at least 3 to 4 patients are coming every day saying कि हम वो message सुनकर डर गए. रोजाना जो है वो मैसेज चल रहा होता है और हम जो है ना उससे डर रहे होते हैं कि ये सिम्टम्स है. आउट ऑफ दोस 5 to 6 women, they have been detected to have breast cancer. One of them being 40 years of age, one of them being 45 years of age. So they are young patients. But इस तरह की campaigns हमारे society में बहुत important role play कर रही हैं. This fact cannot be denied.
जहाँ तक बात है डॉक्टर तारिक ने की, आई वुड अग्री टू हिम के सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, these are expensive options in our setup. National programs चल रहे हैं गवर्नमेंट सेटअप पर भी कि सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड, बट लॉन्ग वेटिंग होती है, लोगों के पास जो है वो अवेयरनेस नहीं है, एक्सेस का इशू है, जैसे डॉक्टर जुबैदा ने कहा, तो देर आर मल्टीपल इश्यूज विच आर एडिंग टू दिस प्रॉब्लम। अगर हम इनिशियली एक पेशेंट को देख भी लेते हैं, दूसरा ये कि फैमिली मेंबर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये जो दूसरे जो अदर देन द एलोपैथिक मेडिकेशंस अगर मैं कहूँ, तो उन चीज़ों की तरफ जो है वो टर्न हो जाते हैं। कोई कहते हैं हम होम्योपैथिक के पास चले गए, कोई दम करवाने चले गए। तो यू नो वेन एवर पेशेंट्स आर कमिंग टू मी नाउ, आई हैव अंडरस्टूड वन थिंग दैट आई से, वट एवर यू आर डूइंग वो आप साइड पे चलाते रहें, बट प्लीज गेट योर मैमोग्राम डन, प्लीज गेट योर अल्ट्रासाउंड डन, गेट योर ट्रीटमेंट स्टार्टेड। ठीक है, बायोप्सी करवानी जरूरी है, आपको जो है जो कराना है कराते रहे, बिकॉज इफ यू स्टॉप देम फ्रॉम डूइंग दैट दे विल नॉट कम बैक टू यू, दैट इज अगेन एन इशू, राइट? सो दिस इज द सिचुएशन करंटली। और जहां तक हम बात करते हैं स्क्रीनिंग की, नेशनल स्क्रीनिंग प्रोग्राम एज सच मैंडेटरी किसी के ऊपर नहीं है अभी हमारे पास। पाकिस्तान में ये नहीं है कि मैं हर किसी खातून को जो है 45 ईयर्स प्लस को एक मैंडेटरी उनके लिए है, या उनके पास फ्री कूपन है कि वो जाके मैमोग्राम करवा ले। बट दैट इज द लीस्ट वी कैन डू इफ वी स्टार्ट क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द मासेस। अगर हम अपनी यूथ को जो है वो सेंसिटाइज कर दें, तो वो अपने पेरेंट्स, अपनी मदर्स को लेकर जाएंगे, अगर वो अपनी आंटीज को लेकर जाएंगे, वो अपनी ग्रैंड मदर्स को लेकर जाएंगे। So men and women equally need to be sensitized about this issue. अब आजकल ये हो रहा है कि like sons they are bringing their mothers for routine checkup, for their routine screening, कि हम आए हुए थे हॉस्पिटल for some other reason, तो हमने कहा चले मैमोग्राम भी करवा लें। तो you know things are improving. मैं अपने डोमेन में इतनी प्रैक्टिस जरूर करती हूँ, whenever a patient more than 45 years of age is coming to me for whatever reason, I offer her a clinical examination of the breast. इफ द पेशेंट अग्रीज, मैं उनसे कहती हूँ कि अपनी ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करवा ले, आपने कभी करवाई है? शी सेज नो, तो मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है, लेट्स डू इट। सो दिस इज you know bit by bit we can start improving things and we can reach near to the target we want to. So people are working hard, everybody is putting in some effort, कुछ ना कुछ चेंज आएगा विद टाइम। और इस तरह के सेशंस अगर जो होते रहते हैं, लोग उसको सुनते रहे, अगर हमारे पास 5 लोग भी व्यूअर्स है ना, तो हम उसको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर अगर लगा लें, तो दे विल बी अ रिजल्ट अल्टीमेटली इंशाल्लाह। Perfect. Thank you very much. I really loved the input and that you all three had, and that's how we are seeing apparently, as Mami Abinda mentioned, the change is coming in. पिछली दफा से हमने इस दफा देखा है, इस दफा हमने जो चीजें या जो initiatives across the nation हम देख रहे हैं, especially the telephonic tune that is up on the phone is something that is a very big initiative, and we really hope things get better, inshallah. And we don't have to, one day sit about it, or at least if we have to sit, we have to sit more on the technical front and not to maybe, counsel people to come up and, have a mammogram done. So now I would just come up with some questions that are very basic to a human individual. A lot of people are not even aware of them. So I would just like to have quick technical questions being asked on this idea, right? So my very first question to you, I'll just go ahead with Tariq Saab and then I'll go up. तो तारिक साहब, मेरा पहला सवाल बड़ा टेक्निकल है थोड़ा सा, वो ये कि हमारे यहाँ जैसे कहा जाता है ना कि फैमिली में एक चैलेंज या एक डिजीज चल रही है, इस तरह से डायबिटीज के बारे में कहा जाता है, तो इज इट सो दैट यही चीज ब्रेस्ट कैंसर के बारे में भी कहीं ना कहीं सच है कि अगर फैमिली में किसी को रहा है तो ये आपको भी चांसेस हैं, या ये रैंडमली है? मोस्ट कॉमनली रैंडम होता है। मोस्ट कॉमनली रैंडम होता है कि woman develops what we call a mutation and that becomes a breast cancer. तो normal cell abnormal बन जाता है और वो breast cancer बन जाता है. That is the commonest way it happens. But at the same time, there are well-known genetic factors जिसको हम familial breast cancer कहते हैं. उसके बहुत सारे genes हैं. The most well-known genes are the BRCA1 and BRCA2 genes. लेकिन अभी कुछ 17-18 genes जो है वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, maybe even more. And some of these genes have been identified to cause many cancers, cancers of the ovary, cancers of the colon, other cancers also. तो हाँ, जेनेटिक होते हैं. अच्छा, जेनेटिक्स किस तरह काम करता है? वो इस तरह होता है कि अगर
वालदा, वालदा की बहनें या अपनी पेशेंट की बहनें, उनमें किसी को अगर कैंसर हुआ है ब्रेस्ट का तो फिर रिस्क बढ़ जाती है, राइट? अगर दूर दराज के रिलेटिव्स हैं तो नॉट सो मच, लेकिन अगर द मटेरियल रिलेटिव्स, अम्मी, अम्मी की बहनें, नानी, अपनी खुद अपनी बहनें, आजकल जो है फॉर द लास्ट मेनी इयर्स नाउ वी आल्सो टॉक के फादर साइड से भी रिस्क आती है, ठीक है? सो देयर इज अ स्लाइट रिस्क फ्रॉम द फादर साइड आल्सो। सो वेरी डेफिनेटली जो है जेनेटिक फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। अगर किसी की फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो इट इज बेस्ट कि वो किसी डॉक्टर को दिखा दें, राइट? इसकी आजकल जेनेटिक टेस्टिंग भी, हमारे यहाँ जेनेटिक टेस्टिंग होनी शुरू हो गई है, कराची में भी हो रही है, बाहर भी हो रही है, लाहौर में भी हो रही है। तो इफ देयर इज अ रिस्क तो उस पर करवा लें, फिर उसके एक पूरा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जाते हैं। बट हाँ, जेनेटिक्स रोल प्ले करती है। मोस्ट कॉमनली जो है वो नॉन जेनेटिक होता है, लेकिन जब जेनेटिक्स रोल प्ले करती है तो उसका एक तरीका है उसको इन्वेस्टिगेट करने का, उसको ट्रीट करने का, एक्सेट्रा। यूजुअली जो जेनेटिक होता है वो अर्लियर एज ग्रुप पे जो है वो डिटेक्ट होता है और अर्लियर ट्रीट होता है। और द गुड थिंग अबाउट जेनेटिक ब्रेस्ट कैंसर इसके प्रोफिलैक्टिकली, यानी बिफोर द डिजीज हैपेंस, हम कभी कभार कुछ कर सकते हैं, तो इसलिए पता होना इज एन एडवांटेज, ठीक है ना? बट आई थिंक आप अगर इसको थोड़ा सा elaborate यूं करें कि, क्योंकि मेनी टाइम मैं मेरे सेशंस में जब बात होती है तो लोग ये सवाल बहुत पूछते हैं, जेनेटिक में और फेमिलियल में क्या फर्क है? तो लाइक फैमिली में होना वही है कि जेनेटिक म्यूटेशन है, या जेनेटिक म्यूटेशन और फेमिलियल होना सेम है? तो प्लीज थोड़ा सा इसको भी बता True, दें। true, true, true. You want me to talk about that? आई वांट यू टू टॉक अबाउट No, you talk about that. Okay, I will. नहीं नहीं, जेनेटिक एक्चुअली जो जो जितने भी ट्यूबर्स होते हैं बेसिकली म्यूटेशन से होते हैं ना, तो दे आर लाइक जेनेटिक म्यूटेशंस। लेकिन मोस्ट ऑफ द म्यूटेशंस खुद ब खुद होते हैं, कोई इसमें कोई फेमिलियल कंपोनेंट नहीं होता, कोई पीछे से कोई जीन नहीं आ रहा होता जो कि आगे जाके ब्रेस्ट कैंसर कॉज करता हो। थोड़ा सा टेक्निकल मामला है जिसको हम ऑन्कोजीन्स कहते हैं ना। हाँ the worker one and worker two, it's a separate thing, हाँ and having breast cancer in the family is हाँ a separate thing. ये चीजें लोगों को कंफ्यूज करती है बहुत जी ज्यादा। जी जी, समटाइम्स इट डज, फेमिलियल या कैंसर्स के अंदर जो है ना ये चीज होती है कि उसके अंदर क्लियर कट जो है ना बहुत रिसर्च स्टडीज हुई हैं। ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस तरह हमारे पास बहुत वाइड डेटा अवेलेबल नहीं है इस चीज का, लेकिन उसमें क्लियर चीज है कि 3 टाइम्स जो होता है वो होती है मदर, सिस्टर एंड डॉटर। ठीक, सेकेंड डिग्री जो रिलेटिव हैं वो आपकी ग्रैंड मदर हैं, आंटीज हैं और ग्रैंड डॉटर हैं। तो दीज आर द maternal, थिंग्स उसमें। हाँ, तो उसमें ये चीज होती है कि ऑन द सेम साइड ऑफ द फैमिली मैटर्स आल्सो, दैट इफ जी यू हैव वन पर्सन, वन इज जी अफेक्टेड ऑन द मैटरनल जी साइड, वन ऑन द पैटर्नल साइड, जी तो रिस्क इतना नहीं होता जितना जी अगर 2 लोग ऑन द सेम साइड ऑफ द फैमिली अफेक्टेड हैं। सो दिस इज फॉर जी द फैमिलियल कैंसर एंड इंक्रीजेस द रिस्क टू 3 टाइम्स नॉर्मल। एक अगर मैं कहूँ कि रिसर्च इतनी ऑनगोइंग है कि द नंबर्स चेंज वेरी रैपिडली। जाता एब्सोल्युटली है अगर फर्स्ट डिग्री फैमिली रिलेटिव है और उसको बायलैटरल ब्रेस्ट कैंसर है, या फिर फर्स्ट डिग्री फैमिली रिलेटिव है और अंडर द एज ऑफ 40 इयर्स जो है वो डायग्नोज हो गए, द एज यंगेस्ट मेंबर ऑफ द एब्सोल्युटली फैमिली जिस पर अफेक्ट होती है, दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। तो ये सारी चीजें। और जहां तक ब्राका की म्यूटेशन की बात है, जिसको कुछ लोग BRCA कहते हैं, कुछ लोग ब्राका, कुछ लोग बरका, वट एवर, हम उसको नहीं जाएं उसमें डिटेल्स में, लेकिन उन म्यूटेशंस में जो रिसर्च कहती है ना, 85% ऑफ द पेशेंट्स हु आर हैविंग ब्राका, अगर मैं कहूँ 100 लोगों का पूल है हमारे पास जिनके म्यूटेशंस हैं, ब्राका पॉजिटिव आए हैं, तो आउट ऑफ दोज 85 पीपल आर गोइंग टू डेवलप ब्रेस्ट कैंसर बाय द एज ऑफ 70 इयर्स। तो म्यूटेशंस का जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट। या हम जेनेटिक टेस्टिंग, ऑब्वियसली हमारे पास लिमिटेशंस हैं, रिसोर्सेज की, फाइनेंसेस की, हर चीज की, बट ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि म्यूटेशंस का अगर हम लोगों को समझा दें, और अगर किसी की नॉन म्यूटेशन पता चल गई है हमें कि इस फैमिली में जो है वो ब्राका म्यूटेशंस जो हैं दे आर रनिंग, तो हम अगर पूरी फैमिली को
वो करवाते हैं तो वी कैन गो फॉर, जैसे डॉक्टर तारिक ने कहा, आई वुड सेकंड हिम कि प्रोफाइलैक्टिक मास्टेक्टमीज भी लोग करवा रहे हैं, एंड दैट इज समथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड, या एटलीस्ट हम उनकी स्क्रीनिंग जल्दी शुरू कर दें, जी अर्ली बिल्कुल स्क्रीनिंग, अर्ली डिटेक्शन के हम जो है उनके जी ऊपर मेथड्स अप्लाई जी करना शुरू कर दें. जैसे जैसे आपने कहा याबिंदा एंड Zubaida is the best person to talk about screening, obviously, कि जो younger patients जिनको suspicion होता है कि इनको familial breast cancer हो सकता है because of the predisposition, तो उनकी screening भी different होती है. जी एक तो early age पे होती है, उसकी जो modality है वो different होती है, mammogram does not help, ultrasound is not enough. तो उसके it's quite a complicated issue. लेकिन I think for the general public, the important thing to understand is if there is a suspicion that family में ज़्यादा cancer हो रहा है, breast cancer, the simplest thing is to go and talk to a doctor, quite honestly. Go and talk to a breast surgeon. तो वो आपके साथ बैठ के आपके particular family की जो details है ना, वो sort out करके बता सकता है कि आपके अपने risk क्या है, क्योंकि generally एक general population को risk समझाना बहुत मुश्किल काम है, which is what I was trying to avoid doing as well, confuse करना. So for me, the answer actually is very simple. If you have questions about your breast, go and talk to a breast surgeon. And ये जो awareness week का मतलब ही तकरीबन यही है कि don't hesitate to go and talk to a doctor. सबसे अच्छी बात ये हो सकती है कि आप जाके बात करेंगे, आप एजुकेट हो जाएंगे और वो आपको क्लीन चिट दे देंगे, आपको कोई वरी नहीं है, go home and have a relaxed life. And that can make a big difference to someone's life. So make going to a doctor an easy thing to do. Yes, I would like to add on here because I'm taking, aggressively sessions this month. And I was like, in every session, I ask people that if you have a problem, breast problem, which doctor you're supposed to see. And literally, I hardly found anyone in my sessions के breast के doctors होते कि उनको breast surgeons. I mean, मतलब ये भी बताने मुझे अब से ये you know, many gynecologists are saying people go to the gynecologist. हमारी society में यही चीज है, that people are going to the gynecologist for any issue which is relevant to their इसी तरह breast से या फिर कोई perianal complaints होती है, कुछ भी होती हैं. The first person they see is their own gynecologist. So they are the person, if we educate the gynecologist, so they are the best people who deal with these things. Absolutely. Yavinda, that's a big if, Yavinda. That's a big if. And again, to take nothing away from gynecologists, again, I may sound a bit like an alien. I don't want to sound like an alien, but No, you find that there's a great range of competencies, and you also find that there's a great range of the amount of time people have to spend with the patient. And therefore, if, God forbid, you end up with somebody with low competence and who has not enough time to spend with you, things could go horribly wrong. So I would second Zubayda's, again, suggestion that really you should go to a breast surgeon. And now there are lots of breast surgeons. I know you're not. I know you're not. I was exactly. saying we need to educate our gynecologists to refer the patients to the breast surgeon. That's what I'm saying, because they're I didn't hear that part. You're absolutely right. You're absolutely right. You're absolutely You're right. absolutely Yeah, I right. missed that part. अब देखो ना, sorry, go on. Patients come to you and you even they don't want to examine their breast, you offer them this, na? Yeah, So that's why you tell them go to gynecologist or whatever. But our gynecologists are not unfortunate. We are unfortunate. Busy enough in they don't examine their breast other than the people come with a complaint. So it should be our gynecologists should be trained because they're the first contact with the women probably, so they should refer the patient. Exactly. Gynecologist should be very proper. So this is also the part of awareness. इसलिए मैं लोगों को ये बताती हूँ कि अगर people are like that कि पहले तो हो जाती है कि many people are like breast डॉक्टर भी होते हैं, ब्रेस्ट सर्जन भी होते हैं, क्योंकि हमारे पास तो ऐसे बेचारे मासूम लोग आते हैं, यू कैन बिलीव मी डॉक्टर तारिक एंड डॉक्टर अबिंदा, वो बायोप्सी के लिए आते हैं, सो दे आर लाइक कि डॉक्टर साहब आप ये कर देंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी. मतलब I know. नहीं होता कि आप किस प्रोसीजर के लिए जा रहे हैं. Absolutely, there's no counseling at that. So you see, हम जो बातें कर रहे हैं ना फैजान,
There are a lot of practical problems here. But for the general public, which I think this is related to, I don't think you need to get into those technicalities. The That's a good. bottom line that I always talk about is um, go and talk to someone. You've got nothing to lose. Maybe a few hundred rupees or whatever. I would But हाँ, just go on, like to Yavinda. add a few things. I would just like to add a few things. एक दो चीजें जो मैं आप इस प्लेटफॉर्म से बताना चाहती थी कि for women less than 40 years of age, ultrasound is the best modality to detect the cancer or whatever problem is there. Yeah, whatever More problem. than Yeah. 40 years or more than 40 years पर mammogram suggested होता है. लोगों ने even some docters who are not from this speciality, they have this impression कि शायद cancer detection के लिए mammogram है. It is not जी, so. जी. राइट अगर यंगर एज ग्रुप है तो उसको 40 इयर्स पे से नीचे अल्ट्रासाउंड करवाना है और 40 इयर्स से अबव पे मैमोग्राम वही आपकी फाइंडिंग्स पिक करके बताएगा. जब ये मैमोग्राम अर्ली करवा देते फिर कहते हैं मैमोग्राम की फाइंडिंग्स जो है वो नहीं सही, That's right. फाइंडिंग्स जो है नेगेटिव That's नहीं right. होती, वो बेसिकली उसमें पिक नहीं हो पा रहा होता Pick कैंसर. me up. अल्ट्रासाउंड की मोडालिटी. और अगर कोई डॉक्टर उनको अल्ट्रासाउंड लिख दे तो वो ये समझते हैं कि डॉक्टर को पता नहीं है और उन्होंने मेरी बात को सीरियस नहीं लिया, उन्होंने That's मैमोग्राम right. नहीं That's करवाया. right. तो ये That's एक right. कॉन्सेप्ट जनरल पब्लिक का ठीक स्ट्रेट करने की जरूरत है. दूसरा कि ये जो एक बायोप्सी कैंसर को फैला देगी, Oh my ये एक God. कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोगों को हर प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करना चाहिए. Absolutely. Because these are the two most sensitive बिल्कुल, issues बिल्कुल. that we are dealing with. You know, the classic उसको डॉक्टर example, पारेख आप the classic example that I could give you is मेरे चाचा बिल्कुल ठीक थे, फिर उन्होंने कैमरा डाल के पेट में से बोटी निकाल, इसके बाद इनको कैंसर हो गया. You know, that's an absolute classic. I've heard it so many times. I'm not making it up. I've heard it so many times that you wonder what kind of. we all trust you on No, that. it's absolutely true. And the same thing happens to the breast. कि बिल्कुल ठीक थे, फिर उन्होंने गोश्त निकाला, इसके बाद इनको कैंसर आ गया. So it's we are living in a society which has been intellectually destroyed over the years, over the last 40 to 50 years. So the few of us who are out there learning things and propagating things, we have a hard life in front of us. You know, and Faizan, you're doing a great job with this, you know, honestly speaking, because the people I hope are listening to this are going to be the warriors, aren't they? They're going to be the people who are going to propagate the message that, you know, it's a science. Um, Biopsies, thank you, Yolanda. That's a very, very good point, Kay. Biopsies don't cause cancer. It's amazing you have to say that. But it's true, you do have to say that, you know. We have to say that. सेशन में पता चला कि इसको लोगों ने और there are so many misconceptions, जिसमें से एक ये है कि लोहा लगेगा तो ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा. तो लोहा लगने का मकसद क्या था? I need to interpret that कि कहाँ से लोहा लगने वाली बात आई है. तो वो बायोप्सी थी और मैमोग्राफी. बायोप्सी नहीं दो. ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा और बायोप्सी होगी तो वो लोहा लगेगा. It's amazing, isn't it? Yeah. Yeah. It's been, you know, going through in this entire conversation, I'm very much enjoying all the conversation that you guys are taking up. It's after a very long time. Apparently, I don't have to plug in for the panel, and the panel itself is so amazing that they're having the conversation rolling in. It's really inspiring. You know, all the stories. Ma'am Yavinda ने जो आपकी बात आपकी अभी share की, I'll be very honest. I'm not a doctor, but ये बात मैंने बहुत दफा सुनी है. ये बात मैंने भी सुनी है कि ये हुआ था. ये बहुत दफा सुनी है. And ये इस वजह से हुआ है. So मैंने भी सुनी, and I completely agree with all of you when you say this, that there's a lot of lack of awareness, there's a lot of lack of understanding on the side of individuals, जो ये कहते हैं ना एक assumptions बनाना शुरू कर देते हैं. And again, you know, emphasizing on their front, because वो उनको नॉलेज नहीं होती, उनको पता नहीं होता, तो वो उनके लिए बस यही होता है कि सही था, फिर डॉक्टर के पास गया, फिर कुछ हो गया, तो जिसका मतलब ये कि सही इंसान डॉक्टर के पास जाकर खराब हुआ, इसका मतलब जो डॉक्टर ने किया वो गलत है. नॉट रियलाइजिंग कि वो जो चीज थी वो ऑलरेडी यहाँ पर रह के ज्यादा बिगड़ जाती, डॉक्टर ने उसे फिर भी कहीं ना कहीं शायद संभालने की कोशिश की. So there's a lot that goes in and out, and again I always say this, that you know, blaming anybody will never help you, neither the doctor nor you, nor it will, you know, get you off the disease. It's just that you need to understand what is it all about and take things forward. You know, as per the current kind of conversation that we have had, you know, the quick learning points to all the viewers that we have as of now are that A, we need to understand
educate ourselves and the people around us. A lot of us are very educated, but then we have a lot of people around us who are not. We have so many people working around us, maybe as janitors, maybe as house help, maybe as maids, whatever you call it. You have people around you. You are very well aware. You're very intellectually updated, and you're so much, on point with everything that you see around that. You go for your mammograms, you go for your regular checkups. But when you see them, they aren't even aware of the concept of breast cancer. So as individuals, it is our responsibility that we, aware, make them enough aware, and maybe we play our part and take them to possibilities where they could, go through them. The second thing is that we mentioned that there are different kinds. It can be genetic, it can be familial, it can be something that could be randomly coming and hitting you up. But you should, if you're going for equal checkups, your timely checkups, you can, maybe be more aware of it and proactively prevent what is coming up. And as Dr. Tariq Club said ना, कि आप इसको जब ये हो जाता है ना, फिर आते हैं ना, और फिर आकर कहते हैं हम क्या करें, then the treatment is expensive. It's better that आप preventatively उसको समझ लें, संभाल लें, and then उसको treat कर लें. तो आपके लिए A, it's good on your pockets, B is good on your health. आपके लिए उस वक्त उस कैंसर से लड़ने से ज्यादा आसान होगा अगर आप प्रिवेंटेटिवली उस चीज को सॉल्व will even help you on the pocket side, and that's quite good of a picture that gets me. I have a couple of questions also coming up from the viewer side and on or people asking me, and I also have my questions. So with all these, I would also like to ask up कि हमने एक चीज बड़ी डिस्कस की, that is the age side. जैसे मैम याविंदा ने कहा ना कि 40 से पहले अल्ट्रासाउंड बेहतर है, 40 के बाद मैमोग्राम बेहतर है. लोग मैमोग्राम को नहीं समझते, and that's what apparently I had a question in the beginning too, कि हम जब ब्रेस्ट कैंसर सुनते हैं ना, being very aware, तो हमारे लफ्ज दिमाग में आता है, वो आता है मैमोग्राम. क्या है ये, क्यों है ये, कैसे होता है, कुछ नहीं पता. बस ये पता है कि कुछ एक चीज है जिससे ये पता चलता है कि इंसान को ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं. जिस तरह से आपने कहा ना, 40 से ऊपर ज्यादा बेहतर है, नीचे नहीं है. अब मे बी 30-year-old और 25-year-old, मेरे लिए तो दिमाग में ये है कि उसको मैमोग्राम कराना चाहिए, बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग एसोसिएटेड टू इट. So my question is, what is apparently mammogram? If you could explain this process of it, or maybe how is it relevant to it? Stress more upon the age factor. कि किस एज से किस एज तक ये हो सकता है, या ज्यादा सेंसिटिव होता है या ज्यादा अप्रोचेबल होता है इंसान टुवर्ड्स द डिजीज. Like, is it at 25 to 30 or 40 that when you are more sensitive to it? Is it 40 plus? Is it somewhere between above 60? So the right age bracket says, you could specify. And दूसरा मैमोग्राम और मैमोग्राम क्या होता है? मैमोग्राम क्या होता है? जब मैं पूछती हूँ लोगों से तो बड़े अजीब अजीब से जवाब आते हैं. People don't know कि चेस्ट में और ब्रेस्ट में फर्क है. छाती का कैंसर इसीलिए कहते हैं, सीने का कैंसर अलग होता है. पता नहीं, बताने में फिर बहुत सारी कहानियां हो जाती है. मैमोग्राम इज सिंपल वे टर्म में, इट्स एन एक्सरे ऑफ द ब्रेस्ट, राइट? जिस तरह से बाकी एक्सरेज होते हैं. कॉम्प्लिकेट करेंगे तो लोगों को नहीं समझ आती है, तो ये सिंपल बताते हैं. इसकी मशीन भी बड़ी आसान सी होती है, बिकॉज बहुत दफा खवातीन को ये जो करा चुकी होती हैं या कहीं से पता नहीं उन्होंने सुना होता है, तो कहते हैं बहुत तकलीफ दे प्रोसीजर होता है, नहीं कराना चाहिए. तो उसमें कंप्रेस होता है ब्रेस्ट, उसमें रेडिएशंस होती हैं, उसी को कराने से ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा. सो इट्स नॉट लाइक दैट. कोई कॉम्प्लिकेटेड उसके अंदर मसला नहीं है. स्टैंडिंग मशीन होती है, पेशेंट को उसके सामने खड़ा कर देते हैं और फिर 1 by 1 उनके ब्रेस्ट को है वो एक्सरे की तरह से बहुत जो उसके अंदर रेडिएशन होती हैं वो बहुत मिनिमल होती हैं. और आजकल इतनी ज्यादा एडवांस मशीनें आ गई हैं कि उसके अंदर बहुत एक्सपोजर जो है वो लिमिटेड होता है टुवर्ड्स रेडिएशंस. तो इट्स नॉट लाइक दैट कि वो उससे कैंसर हो जाएगा, तो ऐसा कोई मसला नहीं है. तो एक एक्सरे हो जाता है ब्रेस्ट का, और फिर वो जो फिल्म आती है वो हम उसको देखते हैं रेडियोलॉजिस्ट, और उसके अंदर जो है वो जो भी एबनॉर्मलिटीज नजर आने के चांसेस होते हैं उसको देखा जाता है. जैसे बिल्कुल डॉक्टर याबिंदा ने बताया कि 40 साल के बाद ब्रेस्ट का जो आर्किटेक्चर है, जो एनाटमी है, वो ऐसी होती है कि वो मेमोग्राफी उसको ज्यादा अच्छी पिक करती है और उससे पहले अल्ट्रासाउंड उसको ज्यादा अच्छा पिक करता है. लेकिन हम यूजुअली हमारी प्रैक्टिस डिफरेंट जगहों की डिफरेंट प्रैक्टिस होती है, लेकिन मोस्टली हमारे सेटअप में ज्यादातर जगहों पर मेमोग्राफी और अल्ट्रासाउंड को एक साथ कोरिलेट करके ही पेशेंट को जो है वो रिपोर्ट जाती है, राइट? और ये मैं यहाँ पे भी ये बात में इम्पोर्टेंट मेंशन कर दूं कि जब हम मेमोग्राफी वो अल्ट्रासाउंड लिख के देते हैं, तो अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट लिख के देना इनफ नहीं होता. अल्ट्रासाउंड बोथ ब्रेस्ट
होता है, इंक्लूडिंग एक्सिला लिख के देना जरूरी होता है, वरना आपने जहां पर उनको जिस जगह प्रॉब्लम है बस वहां का ही स्कैन होके आपके पास आ जाएगा, और फिर नाउ अगेन यू हैव टू सेंड द पेशेंट, बहुत बड़ा मसला हो जाता है। तो थोड़ा सा हमारे जो डॉक्टर्स की प्रैक्टिसेस को भी जो है वो ऑब्वियसली देखना पड़ता है, क्योंकि लोगों को नहीं पता होता हर लेकिन डॉक्टर बार। जुबैदा एक्चुअली बात ये होती है कि हम जब गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स की बात करते हैं ना तो भी डिफरेंट है, बिकॉज बिल्कुल एवरी इन्वेस्टिगेशन इज चार्ज सेपरेटली, राइट? तो हम जब व्हेन आई वाज वर्किंग इन सिविल हॉस्पिटल और हमारी वहाँ प्रैक्टिस थी, तो रेडियोलॉजी में हम हमेशा लिख कर देते थे मैमोग्राम ऑफ द ब्रेस्ट विद कॉम्प्लीमेंट्री अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड ऑफ द ब्रेस्ट एंड एक्सिला, वी न्यू इट। और यहाँ पर अगर हम लिख कर देंगे तो पेशेंट की कॉस्ट अगर वो 3000 4000 है, तो दैट is going to jump towards 6000 7000 अगर हम एक्सिला अल्ट्रासाउंड ऑफ द ब्रेस्ट एंड एक्सिला, और अगर ओल्डर पेशेंट है तो हम मैमोग्राम विद अल्ट्रासाउंड ऑफ द एक्सिला ओनली लिखते हैं, क्योंकि एवरी ऑर्गन इज चार्ट सेपरेटली फॉर द अल्ट्रासाउंड। तो ये इसलिए भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि डिफरेंट वेरी करती हैं, शी इज वेरी राइट डॉक्टर बेटा दैट सेटअप टू सेटअप डिफरेंस होते हैं। लेकिन फिर भी ये बात है कि बेसिक अगर कोई आपको डॉक्टर लिखकर दे रहा है या ब्रेस्ट सर्जन लिखकर दे रहा है, तो यू शुड ट्रस्ट योर डॉक्टर एंड नॉट योर फैमिली मेंबर on this एग्जैक्टली। matter. Perfect. Thank you very much. Apparently the time as for the time we requested you all, वो हमारा पूरा हो चुका है. So I would, I would really like the conversation can keep on going. The way you've been talking around, it's something that I would love to just keep on listening to each one of you, and it would keep on going. But I know we all have stuff to do, and we all have other commitments too. So just a closing remark from each one of you. And I would really want your closing remarks to have, just one message that you would want to give out to all the individuals, apparently youngsters with a specific idea, that because that's the primary audience that you're targeting to, with regards to this awareness. What would you want them, both male and female? And second thing is just one counseling statement to each one of them, making them understand that all these things that we've just discussed, that they are not harmful. These radiations or these mammograms, these ultrasounds aren't harmful. These biopsies aren't the one that are causing these cancers. Actually, when you come up to us and you talk to them, it's not difficult. So maybe something, one counseling statement and one message to the youth that you would love to give. I would really like to hear that. डॉक्टर तारिक शुरू करें। ओके ओके मैं तो ये कहूँगा जो मैंने पहले भी कहा था अभी, कि इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट योर ब्रेस्ट, पेन हो, लंप हो, फैमिली हिस्ट्री हो, किसी डॉक्टर को जाके दिखा दें। डॉक्टर को दिखाने में आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अर्ली ट्रीटमेंट से बहुत फर्क पड़ता है। बाकी दुनिया में अब ब्रेस्ट कैंसर की मोर्टेलिटी बहुत कम होने लगी है काफी सालों से। हमारे यहाँ अभी भी बढ़ रही है, और अभी मोर देन द मोर्टेलिटी हमारे सफरिंग अभी भी बहुत है। तो डॉक्टर के पास चले जाएं। आपके कहीं इधर उधर सुने किसी के बारे में कोई हो, तो उनके फैमिली को इनकरेज करें कि वो डॉक्टर के पास चले जाएं और एक अच्छे ब्रेस्ट सर्जन को ढूंढ के उसको दिखा दें। और हमारे यहाँ अच्छे ब्रेस्ट सर्जन्स की बिल्कुल भी कमी नहीं है, हर जगह मौजूद है। अब ये भी मसला नहीं है बहुत सारे लोगों को कि फीमेल्स नहीं है या मेल्स हैं, सो डॉक्टर्स आर देयर टू ट्रीट द पेशेंट irrespective of male and female। इस झिझक और इस चीजों से निकलें, लोगों की बातों से निकलें, टैबू से निकलें। प्लीज अपने आप को इम्पोर्टेंस दें, अपनी सेहत को इम्पोर्टेंस दें, और ट्राई टू नो योर बॉडी। अपना एग्जामिनेशन करने की भी आदत डालें। आई नो कि दिस इज नॉट 100% स्क्रीनिंग थिंग कि आप जो अपना एग्जामिनेशन हम करते हैं मंथली, हम लोगों को प्रमोट करते हैं, लेकिन उससे एटलीस्ट आपको ये आइडिया होता है कि बॉडी में कुछ चेंजेस आनी शुरू हुई हैं, कुछ कुछ फील हो रहा है। क्योंकि मेनी टाइम पेशेंट्स आते हैं और कहते हैं एक हफ्ते पहले ही जो है वो इतना बड़ा लंप कैसे फील हो सकता है एक हफ्ते पहले, ये वहां पे मौजूद होगा जो आपने नहीं फील किया कभी, और इंसिडेंटल बच्चे का सर टकराया या चोट लगी या कुछ हुआ और उससे पेन हुआ। सो दिस इज अ पेनलेस डिजीज, इसलिए इसकी प्रेजेंटेशन हमारे यहाँ लेट है कि हमारे यहाँ फीमेल्स इतना ध्यान नहीं देती। तो अपना ध्यान दें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, और जैसे डॉक्टर तारिक ने कहा और डॉक्टर याबिंदा ने कहा, चाहे कितनी ऑल्टरनेट मेडिसिन को दिखाना है दिखाएं, लेकिन एक अच्छे डॉक्टर के पास जरूर जाएं जो भी आपकी विसिनिटी में अवेलेबल है, और ब्रेस्ट सर्जन को दिखाएं तो बहुत ही अच्छी बात होगी। Very much, I think very well summarized by both। बस यही बात है कि इसको टैबू ना समझें, और प्लीज
have your routine tests done. और दूसरा ये कि अगर आपको breast lump, pain, abnormal nipple discharge, change of shape of the breast, कोई उसकी शक्ल सूरत साइज किसी भी किस्म का कोई रिसेंट चेंज आप फील करें तो प्लीज आप अपने डॉक्टर को दिखाएं और उसके बारे में बात करें, अपनी फैमिली को इनकरेज करें, बोथ फॉर द गर्ल्स एंड फॉर द बॉयज, क्योंकि आप बता रहे हो कि यंगर जनरेशन इज वाचिंग. प्लीज encourage your mothers and your aunts, your grandmothers to seek help in this regard. At least अपने baseline mammograms करवाएं और हमें at least approach कर लें किसी भी breast surgeon को ताकि उसकी early detection हो सके. Thank you very much. It's really nice having you all. मुझे पीछे से टीम बता रही है काफी technical discussion हुआ है, and that's something that I've really loved because at times we usually talk some things about taboo is something that one should talk about and counseling is something that one should do, but at the very same time, as individuals of this society, we also need to understand some action points that are very much required by us and the action points that we need to take into consideration moving forward. I would like to close the first day of this awareness session on this such an important subject matter. मैं तो सिर्फ subject matter की importance इस बात से बोल रहा हूँ कि शायद हम बाकी चीजों के ऊपर एक एक दिन लगाते हैं, ये नहीं कि उसकी उनकी वैल्यू कम है, बट ये बताने के लिए कि शायद इस चीज को हमने कितना निगलेक्ट किया हुआ है कि इसके ऊपर काम करने के लिए दुनिया में हम पूरा महीना लगाना पड़ता है हमें. सो प्लीज इस चीज की अहमियत को समझें, इससे भागने के बजाय इसके बारे में बात करना शुरू करें, इसको नॉर्मलाइज करना शुरू करें. ये जब नॉर्मलाइज हो जाएगा तो ये सारी चीजें जो हम कह रहे हैं ये हमारे लिए आसान हो जाएंगी. सी अराउंड हमारे लिए दूसरी बातें करना भी बड़ा कहते हैं ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा टैबू हो जाता है. हम अपने कॉलीग्स के साथ भी शायद इस तरह की बात नहीं कर सकते, ये सोचते थे कि इट्स क्वाइट ऑफ अ स्टिग्मा, इट्स क्वाइट ऑफ अ टैबू, रादर देन अंडरस्टैंडिंग के अगर कोई वाली बात हम कहावतों में तो कहते हैं जान है तो जहान है, लेकिन जब जान की बात आती है तो हम या तो टैबू की तरफ जाने लग जाते हैं या हम सोसाइटी की तरफ लाने लग जाते हैं या हम कुछ और सोचने लग जाते हैं. तो इस चीज से निकल कर आए, अपना ख्याल रखें, अपने अपने इस जिस्म का ख्याल रखें, कहीं ना कहीं अमानत है, आपको इसके ऊपर भी जवाब देना है. सो थैंक यू वेरी मच टू ईच वन ऑफ यू. इट वाज रियली नाइस हैविंग ऑल ऑफ यू. One of the most amazing panel discussions that I would have ever had on a digital platform. Loved every second of this conversation. Thank you very much. It was really nice having you all. Lafis, apna khayal rakhega to you all three and all the viewers who we have with us. Good night, Lafis. Thank you, Faisal. Thank you